Hello everyone, my name is Anurag Singh. Can you hear me? Am I audible? Mukul, Jatin, Kailash, Prateek, Rahul, Akil, Monica, everyone, am I audible? If I am audible, just type in the chat. Okay, Nazim. Okay. Rahul, Prateek, Muskan, Jatin, everyone, can you hear me? Okay, okay. Neeraj, okay. Chalo, chalo, let's start. So, today we will study about the CPC. So, one thing before starting CPC, you need to understand the importance of CPC. Okay? How much important is it? ठीक है? Importance समझो पहले इसकी. देखो, criminal law की अगर हम लोग बात करें, if we talk about the criminal law, that would be limited to IPC, CRPC, and the Indian Evidence Act, right? Only this is criminal law. इसके अलावा नहीं होता. Every other law that you will study will fall under the civil category. जो या फिर it may be contract, it may be TPA, it may be Hindu law, it may be Muslim law, it may be Muslim law, it may be SOGA, it may be partnership, equity, trust, कुछ भी आए. Even constitutional law will fall under the civil category, right? ये सभी civil के अंदर आते हैं. So it is not an exaggeration to say that 90% of the laws, they fall under the civil category, right? And there is only one code to regulate them all. सारे civil laws को regulate करने के लिए there is only one CPC. There is only one code. That is the CPC, right? The Code of Civil Procedure. So, you can see that CPC is a very important topic because it regulates 90% of the laws. So, अगर आपका CPC आपको समझ में आ गया, then you will have a grasp over 90% of the law because उसके अलावा criminal law is very limited. IPC, CRPC and evidence. That is it, right? So first thing, CPC. Why is it CPC important? Because it regulates 90% of the laws. So सारे के सारे law को regulate करने के लिए there is only one CPC. That is the importance of CPC. ठीक है. Next is कि from an examination point of view, let's say you are going for the judicial services exam, right? 3-stage exam होगा जिसमें से in the prelims you can expect somewhere between 18 to 25 questions. 18 to 25 questions. And all exams, यहाँ पर याद रखना, all exams will have a prelim stage जहाँ पर कि 18 to 25 questions आपके CPC से होंगे. Secondly, in the mains examination, you will have a separate paper on procedural law. Procedural law का एक separate paper होगा. And in this procedural law, there will be 3 components. One would be CPC, other would be CRPC, and the third one would be the Indian Evidence Act, right? So all of these, they will need to be. So इसमें भी देख सकते हैं, all of these you have to pay attention, but 1/3 weightage अभी भी CPC को यहाँ पर मिल रही है. And apart from this, in the examination you also have to write, कभी कभी एक plaint लिखनी होगी, एक written statement लिखनी होगी, and in some examinations even judgment writing is going to be there. Judgment, right? So you can write a plaint only when you are familiar with the CPC. अगर आपका CPC clear है तभी आप plaint लिख पाओगे. Even written statement तभी लिख पाओगे जब आपका CPC clear है. And also judgment तभी लिख पाओगे जब आपका CPC clear है, right? Otherwise वहां पर आप सिर्फ वंडर करते रह जाओगे कि plaint कैसे लिखूं, how do I write the plaint, how do I write the written statement, judgment कैसे लिखूं, क्या छोड़ूं, right?
So always remember, CPC is the most important subject that you will study. Most important subject. So anytime if you ignore CPC, you are ignoring 90% of the laws. So don't make that mistake. And CPC को अच्छे से पढ़ना है. Everybody, are you getting my point? Jatin, Kailash, Mahesh, Mukul, Akil, Nazim, Neeraj, Rahul, Sandeep, Daksh, everyone. Are you getting my point? That CPC is the most important subject that you will study. If you ignore CPC, आप अपने आप को restrict कर रहे हो from understanding law. याद रखना, CPC हर जगह काम आएगा आपके. ठीक है? चलो, now that we have established, sir, हमारे लॉ इंचार्ज है. ओके, सॉरी, आई डिड नॉट नो. मिस्टर Kailash PC. Okay, sir, sorry, I was not aware of this fact. Nazim, thank you for reminding me. Okay, Nazim, thank you. Dr. Kailash, I'm really sorry, I did not know that you are the in charge here. चलो, so अब हम लोग को ये समझ में आ गया है that CPC is very important from an understanding perspective also and also from an examination point of view. हर जगह CPC का यूज आपका हर जगह होगा ही. But next question is, how do we study CPC? कैसे पढ़ना है? देखो, CPC can be very tough and can be very easy depending upon your approach. आप कैसे पढ़ते हो? तो first thing, CPC is divided into sections and orders. It is divided into sections and orders. There are 158 sections and 51 orders. Right? There are 158 sections and there are 51 orders. This is LI written in Roman numerals. Right? अब देखो, what are sections? In CPC, sections are, they only give you the broad framework. The broad framework or general principles. The broad framework or the general principles. Sir, okay, everyone, please share your name and your contact number in the direct message, not in the group chat where everyone can see. Direct message karo. Please share your name and your contact number in the direct message. Everyone start doing it. Direct message karo, not in the group chat where everyone can see. Chalo, start kar do ise. Chalo. So sections are what? Sections, they give you the broad framework or the general principles. Here you will not find any details. यहाँ पर Nazim, in the not in the group chat, private message करो बेटा. Direct message जो होता है hidden, which only I can see, no one else. ठीक है? So sections are what? Sections are the broad framework or general principles. They do not contain details. यहाँ पर details नहीं होती है हमारी. Orders, they are the real elaboration of proceedings. They are the real elaboration of proceedings, right? This is where you will get the details. Details आपको orders में मिलती हैं. याद रखना, section will not contain details. Sections आपको बस broad framework बता देगा या general principle बता देगा. And orders are the one which are the real elaboration of proceedings where you are going to get the details, right? So याद रखना कि in CPC, for almost every important section, हर एक important section का there will be a corresponding order. For every important section, there will be a corresponding order. So what you have to do, you have to read the section and directly jump to the corresponding order. ठीक है? Section पढ़ो, go to the corresponding order. Do not go section wise and topic wise, or do not go
सेक्शन वाइज एंड ऑर्डर वाइज नहीं, डोंट मेक दैट मिस्टेक। सेक्शन आपको क्या करेगा, ये फ्रेमवर्क बता देगा कि what all should be done, but how is that to be done, that would be contained in the order, that is the details of the section will be in the order. So you have to read the section and then go to the detail. Framework padho, then go to the details. So for every important section, almost every important section will have a corresponding order. तो हम लोग को सीपीसी कैसे पढ़ना है, सेक्शन पढ़ो, सेक्शन के बाद डायरेक्टली ऑर्डर पे जंप करो, फिर दूसरा टॉपिक आया उसका सेक्शन पढ़ो और फिर ऑर्डर पे जाओ. सो डू इट टॉपिक वाइज, टॉपिक वाइज पढ़ना, नेवर गो सेक्शन वाइज एंड ऑर्डर वाइज. और ये भी याद रखना दैट इसमें सीपीसी में नॉट इफ यू आर इग्नोरिंग वन और दी अदर, मतलब या आप सेक्शन पढ़ रहे हो और ऑर्डर छोड़ रहे हो या ऑर्डर पढ़ रहे हो सेक्शन छोड़ रहे हो, नो, डोंट मेक दैट मिस्टेक. फॉर एनी प्रोविजन देयर विल बी अ सेक्शन एंड उसका एक ऑर्डर होगा, राइट, दोनों. सो दे आर एक्चुअली प्लेइंग अ कॉम्प्लीमेंट्री रोल, दे आर एक्चुअली प्लेइंग अ कॉम्प्लीमेंट्री रोल, ठीक है. सो यू हैव टू रीड बोथ सेक्शन एंड ऑर्डर, डू नॉट इग्नोर वन और द अदर, दोनों में से कोई एक भी इग्नोर नहीं करना है. यू हैव टू स्टडी बोथ ऑफ देम. दिस इज हाउ यू शुड स्टडी सीपीसी. एवरीवन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जितने भी लोग हैं यहाँ पर, दीपक, भारती, राहुल, जतिन, आशीष, एवरीवन, मुस्कान, एवरीवन, ठीक है, ठीक है, चलो. सो टुडे आई विल गिव यू वन एग्जांपल हाउ यू शुड स्टडी सीपीसी, ठीक है. एंड we will this example is by studying a topic. The topic is due institution of suits. Due institution of suits, right? First thing, what does it mean? क्या मतलब होता है due institution of suits का? देखो, due institution of suits means how do you file a suit in a court. या फिर इसका ये भी मतलब हो सकता है that what formalities do we need to fulfill in order to properly file a suit. In order to properly file a suit. So our topic is due institution of suits, which means either it can mean how do you file a suit in a court, right? Section 26 read with order 4, right, Nazim? Very good. You do. What formalities do we need to fulfill in order to properly file a suit, right? Although Nazim, your answer is correct, but that is incomplete. जितना तुमने बोला है ये सही है, लेकिन ऐसा नहीं कि यहीं तक है. There are other things that also need to be considered. So how do you file a suit in a court? देखो, इसके लिए there is a checklist. If you want to file a suit, you need to fulfill all these. देखो, checklist लिख लेना because our whole lecture will be around this checklist. इस checklist में number 1 है हमारा Section 26. As Nazim said, Section 26. Number 2 is Order 4. Both these were already quoted by Nazim. Number 3 is Order 6. Number 3 is Order 6. Number 4 is Order 7. Number 4 is Order 7. And number 5 is actually a part of number 3, but फिर भी हम लोग इसे separately पढ़ते हैं, which is Order 6 Rule 15. Order 6 Rule 15. So this is the checklist that you must fulfill. ठीक है? So Nazim, to your checklist,
1 2 तो तुम्हें पता था, 3 4 5 ऐड कर लो एंड वी विल डू इट कि व्हाई डू वी नीड दीज आल्सो. वी कैन नॉट जस्ट बी लिमिटेड टू 1 एंड 2. 3 4 5 हमें क्यों चाहिए होगा आज पता चलेगा. चलो, सेक्शन 26 एंड ऑर्डर 4, दीज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स. दोनों रिलेटेड है डायरेक्टली किससे? इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स से. ऑर्डर 6 इज pleadings generally. Order 6 is pleadings generally. Order 7 is plaint. Order 7 is plaint. And order 6, rule 15, this is verification of pleadings. Right? Verification of pleadings. Right? So we have to consider all of these in order to properly file a suit. तो ये all of these होना चाहिए. 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे आप फॉर्मेलिटीज फुलफिल करोगे तभी जाकर के आपको बोला जाएगा कि you have filed the suit properly. ठीक है. चलो, now we are going to deal with this checklist one by one in detail. So number 1 is section 26. Number 1 is section 26. So if you have the Bare Act, you can just open the Bare Act. अगर Bare Act है बेटा, आपके पास Bare Act open कर लो. If you don't have the Bare Act, you can just look at the screen. Screen पर देखो. If you can see the screen, everybody. देखो, what is this? This is section 26, which is institution of suits. Right? Everybody, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, आशीष, चैतन्य, ज्योति, महेश, मानसी, राहुल, प्रतीक, निधि, सुदर्शन, सुनीता, everyone, can you see the screen? नजीम, रेणुका, शिवानी, नेहा, दीपक, everyone. Okay, ठीक है. चलो, let's start with section 26. section 26 से start कर रहे हैं हम लोग. और देखो क्या लिख रहा है. सबसेक्शन 1 हम लोग कर रहे हैं सबसे पहले. It says every suit shall be instituted by the presentation of a plaint or in such other manner as may be prescribed. What does it say? Every suit shall be instituted by the presentation of a plaint. It essentially means if you want to file a suit, what you have to do? First, file a plaint. आपको एक plaint file करनी होगी, right? So section 26 का subsection 1, it says if you want to file a suit, file a plaint. तो for filing a suit, first file a plaint, right? अब इसको ऐसे समझो कि देखो, for a suit to exist there must be a plaint. इसको ऐसे समझो, for a suit to exist, there must be a plaint. अगर हम लोग कह रहे हैं कि there has been a suit filed, मतलब कि एक plaint फाइल हो चुकी होगी. ठीक है, फर्स्ट थिंग. अब देखो यहां पर सेक्शन 26 इज वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड कि अगर आपको एक सूट फाइल करना है तो एक प्लेंट फाइल करनी होगी, राइट? बट इसमें देखो कहीं डज इट से कि द कंटेंट्स ऑफ द प्लेंट, ये बोल तो दिया कि प्लेंट फाइल करिए, बट as the question been answered that what should be the contents of the plaint? Looking at section 26, can we say that what should be the content of the plaint? What should be the contents of the plaint? Right? This question, has it been answered in section 26? This question has not been answered here. No, it has not been answered here, right? So what do we do? एक काम करना, ये क्वेश्चन अभी क्वेश्चन नंबर 1 लिख करके एंड जस्ट सर्कल इट. इससे ज्यादा यहां पर अभी नहीं करना. इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को थोड़ी देर में मिलेगा. एज नजीम पॉइंटेड आउट कि ऑर्डर 7 रूल 1 में है. ऑर्डर 7 रूल 1 में है लेकिन सिर्फ वहीं पर नहीं है. ऑल्दो दैट इज करेक्ट बट इट इज इनकम्प्लीट. नजीम, टुडे यू विल गेट द रियल डिटेल्स. ठीक है, चलो
नाउ अब हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि फॉर अ सूट टू एग्जिस्ट सेक्शन 26(1), व्हाट डिड इट से? दैट फॉर अ सूट टू एग्जिस्ट देयर मस्ट बी अ प्लेंट। एंड अब यहां पर आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आई वांट एवरीबॉडी टू आंसर। पहले बताओ दैट सपोज यहां पर लिखा है फॉर अ सूट टू कमेंस, फॉर अ सूट टू कमेंस, and let's say give you four options. An application must be filed, an application must be filed. B, a complaint must be registered, a complaint must be registered. And C, a plaint must be presented, a plaint must be presented. And D, let's say D is none of the above, none of the above. So what is the answer to this question? Ashish and Nidhi are saying C. Neeraj is also saying C. Okay, Nazim. Okay, very good. Akil, right? And what about everyone else? Aarti, Megha, Devika also right. Uma, correct. Right. What you have to do? You have to file a plaint, right? So this is the answer, right? देखो, in judiciary exams, in the prelims, right? Mansi Neha also correct. See, देखो, in judiciary exams, in prelims, ऑलवेज याद रखना कि प्रीलिम्स में 70% क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी फ्रॉम द बेयर एक्ट। 70% क्वेश्चंस जो होंगे वो बेयर एक्ट से होंगे। सो फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू, यू नीड टू बी थॉरो विद द बेयर एक्ट। एकदम थॉरो रहो। देखो बेटा, आई हैव आल्सो गिवन एग्जामिनेशंस, मैंने प्री दिए हैं, मेंस दिए हैं, इंटरव्यूज भी दिए हैं, यूपीएससी के भी दिए हैं, आईएएस एग्जामिनेशन के और जुडिशियल सर्विसेज के भी दिए हैं। from my experience I can comfortably say कि अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो बेयर एक्ट पे ध्यान दो। बेयर एक्ट 70% क्वेश्चन जो होंगे वो बेयर एक्ट से ही होंगे। ठीक है, दैट वाज माय पॉइंट, आस्किंग द क्वेश्चन वाज नॉट माय पॉइंट। बस बेयर एक्ट पे ध्यान दो। अगर बेयर एक्ट आपकी क्लियर है तो ये प्रीलिम्स का कोई नहीं रोक सकता। ठीक है एवरीबॉडी, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सबको समझ में आ रही है मेरी बात? बेयर एक्ट, इफ यू वांट टू क्वालिफाई फॉर प्रीलिम्स, आपको बेयर एक्ट से थरो रखना है अपने आप को। ठीक है, अभिषेक एंड नेहा, मानसी, उमा, एवरीवन, निधि, नीरज, सबको समझ में आ रही है मेरी बात? ओके, सो yes, Uma, if you have anything to say, anything you want to ask, just type in the chat and I will respond to your queries. If you have any question, just type in the chat. If you have any question, any kind of query. Okay, okay, chalo, let's move. So this was section 26(1), which said to, it simply said कि अगर आपको एक सूट फाइल करना है, so you have to file a plaint. Did not answer the question what should be there in a plaint. Did not say, right? अब इसके बाद now let's go to section 26(2). Now we are in section 26(2). In every plaint, fact shall be proved by affidavit. It says in every plaint, facts shall be proved by affidavit. So this is also pretty simple. Section 26(2) says facts shall be proved by affidavit. Facts shall be proved by affidavit. Now remember that affidavit is not considered as proof. Affidavit is not considered as proof. So this 2002 amendment has sir, मतलब हाँ, ओके ठीक है, बात सही है तुम्हारी। ठीक है नजीम, ओके। फैक्ट शैल बी प्रूव बाय एफिडेविट, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। व्हाई इज दिस अ रॉन्ग स्टेटमेंट? बिकॉज एफिडेविट is not considered proof, is not considered as proof or evidence, as proof or evidence. Why is it not considered proof or evidence?
एफिडेविट को क्यों नहीं कंसिडर करते? देखो, इफ यू हैव स्टडीड एविडेंस, वहां पर सेक्शन 1 में पैरा 2 में इट क्लियरली सेज द इंडियन एविडेंस एक्ट डज नॉट एक्सटेंड टू एफिडेविट्स, वहीं पर लिखा है बट नॉट टू एफिडेविट्स. इफ यू हैव द बेयर एक्ट ऑफ एविडेंस, वहां पर देखो क्लियरली लिखा है बट नॉट टू एफिडेविट्स. सो इवन इफ सीपीसी सेज दैट एफिडेविट पे प्रूव हो जाएगा, फैक्ट शैल बी प्रूव बाय एफिडेविट, this will still be a wrong statement because of section 1 para 2 which says but not to affidavits, right? याद रखना, it does not extend to affidavits. Indian Evidence Act does not extend to affidavits. So अगर हम लोगों ने ये तो प्रूफ कर दिया, चलो ये तो स्टैब्लिश कर दिया कि रॉन्ग स्टेटमेंट है, बट व्हाट इज गोइंग टू बी द करेक्ट स्टेटमेंट? यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी? द करेक्ट स्टेटमेंट वुड बी facts shall be supported by affidavits. Facts shall be supported by affidavits. ठीक है? सो याद रखना कि जो भी आपने प्लेंट में फैक्ट्स बोले हैं, those facts have to be supported by affidavits. So what section 26 is saying, that there must be a plaint to file a suit. That plaint has to be supported by an affidavit. एक एफिडेविट से सपोर्ट करना है, राइट? अब आपने एफिडेविट में आपने लिख दिया दैट दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस फैक्ट इज ट्रू, दिस फैक्ट इज ट्रू. दैट डज नॉट मीन इट हैज बिकम एविडेंस. नहीं, यू हैव टू गो लेटर ऑन द ट्रायल स्टेज एंड नाउ यू आर गोइंग टू गिव द एविडेंस और द प्रूफ ऑफ those facts that you declared in the affidavit, that what is going to be the evidence, right? याद रखना everyone. It's only a declaration. It is a statement under oath. Right? Somebody's mic is on. Please turn off your mic. Right. So it is only a declaration, and that too a declaration, not only a declaration, it is a statement under oath. You will be held responsible if you lie under oath. Right? What happens when you file a false affidavit? Nazim, you said it is only a declaration. It's not only a declaration. It is a statement under oath. It is a statement under oath. What happens when you lie on oath, which is essentially means when you lie on oath, that means you are filing a false affidavit. What happens? What is the punishment? Can there be any legal action against that person who has lied under oath or false? Right? Under section 193 of IPC, they will be liable for punishment. So lying under oath, what is it called? Lying under oath, इसे क्या कहते हैं? Giving false evidence, right? Nazim, lying under oath, इसे क्या कहते हैं हम लोग? This is known as perjury. So punishment for perjury is under 193 IPC. Nazim, here I want to थोड़ा सा टॉपिक से डेविएट कर रहा हूं, बट फिर भी सेक्शन 340 सीआरपीसी भी एक बार देख लेना बेटा. ठीक है, वहां पर भी एक बार चेक करना, वहां पर भी देयर इज अ सिमिलर प्रोविजन देयर आल्सो, नॉट ओनली आईपीसी बट 340 सीआरपीसी में भी है, दोनों जगह है वहां पर. ठीक है, चलो लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक. हम लोगों ने देखा कि सेक्शन 26 सेज देयर मस्ट बी अ प्लेंट एंड देयर मस्ट बी एन एफिडेविट टू सपोर्ट द प्लेंट. दैट इज इट. इसके अलावा वहां पर और कुछ भी डिटेल नहीं दी गई है. यू कैन सी सेक्शन 26 सेज प्लेंट होना चाहिए और प्लेंट को सपोर्ट करने के लिए एक एफिडेविट हमारा होना चाहिए. सो इट डज नॉट मीन कि आपने एफिडेविट में लिख दिया तो वो प्रूफ हो गया. नो, यू विल हैव टू गिव द प्रूफ लेटर ऑन एट द ट्रायल स्टेज, राइट? अब यहां पर एक क्वेश्चन और अराइज होता है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, दैट व्हाट डू वी डू विद द प्लेंट एंड द एफिडेविट? व्हाट डू वी डू विथ द प्लेंट एंड द एफिडेविट? What do we do with the plaint and affidavit? बनवा तो लिया, हमारे पास है भी, but what do we do now? अब हम लोग क्या करें इसका? File in court, okay? Not necessarily, but
ऑल्दो थियोरेटिकली करेक्ट नजीम, बट नॉट नेसेसरली इन कोड। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन नंबर 2 लिख लो, एंड देन अभी थोड़ी देर बाद इसका हम लोगों को आंसर मिलेगा। ठीक है, चलो। सो सेक्शन 26, दिस वाज आवर चेकलिस्ट में नंबर 1। नाउ वी गो टू नंबर 2 in the checklist. Number 2 is order 4. Number 2 is order 4. So if you have the bare act, you can just open order 4. If you don't have the bare act, you can just look at the screen. देखो, order 4 is institution of suits, right? अब यहाँ पर देखो, in the beginning of the lecture I said कि for studying CPC you have to study the section and then you have to directly go to the order. That is the proper way of studying CPC. आपको सेक्शन पढ़ना है and then you have to go to the order. अभी हम लोगों ने सेक्शन 26 किया है and अब सेक्शन 26 का corresponding order है हमारा order 4. That is the proper way to study CPC. सेक्शन पढ़ो, उसका corresponding order पढ़ो। ठीक है everyone, जितने भी लोगों को मैंने ये बताया था, this is one of many examples. Right. So institution of suits के लिए what you have to do, you have to study section 26 in order 4. जितने भी लोग थे in the beginning of lecture, are you getting my point? मैंने एक example दिया है अभी अभी। देविका, ज्योति, जतिन, मुकुल, नीरज, प्रतीक, you were all there in the beginning of the lecture. सबको समझ में आ रहा है? Always do this section order. Order 4 institution, order 4 rule 2 registration. Right. Okay, everyone. So first thing we need to do, order 4 के rule 1 में आते हैं हम लोग। Order 4 rule 1 and it says sub rule 1. देखो sub rule 1 में क्या लिखा है? Every suit shall be instituted by presenting plaint in duplicate. By presenting plaint in duplicate. Now first thing, what do you mean by plaint in duplicate? Order 4 का rule 1 sub rule 1, it talks about plaint in duplicate. What do you mean by plaint in duplicate? Simple meaning होती है इसकी a copy of plaint, right? A copy of plaint. चलो, तो देखो यहाँ पर first thing, section 26 में there was a plaint and there was an affidavit. Now we have an extra requirement that a copy of plaint must also be there. First question, why do we need this copy of plaint? क्या जरूरत है इसकी? Anyone? बताओ, why do we need a copy of plaint? Why do we need a copy of plaint? क्या जरूरत पड़ गई इसकी? We are already filing the plaint in the court. Why do we need a copy of plaint? याद रखना कि whenever one for yourself, Uman, no, not that. याद रखना कि whenever you are filing a plaint to give to opposite counsel, okay, Ashish, almost you are very clear. Then what do we do with the original plaint? रुक जाओ एक मिनट, I'm answering everyone's question. याद रखना कि whenever the summons are served upon the defendant, उसके साथ हमेशा एक कॉपी ऑफ प्लेंट जाती है। ऑलवेज रिमेंबर, whenever there the summons are served upon the defendant, always there will be a copy of plaint along with that summons. So the copy of plaint is actually served upon the defendant, and this plaint which you filed in section 26, this forms a part of record of the court, forms a part of the record of the court. ठीक है, सो एटलीस्ट आपको 2 कॉपीज तो लगानी ही होंगी, एक जो कोर्ट में जाती है और एक जो डिफेंडेंट के ऊपर सर्व होती है, राइट? सो 2 लगेगी। 26 वाली तो कोर्ट में रह जाती है, लेकिन रूल 1 सब रूल 1, ऑर्डर 4 रूल 1 सब रूल 1 वाली, दे आर द पर्पस ऑफ दैट कॉपी ऑफ प्लेंट इज टू बी गिवन टू द डिफेंडेंट। समन्स के साथ हमेशा वहां पर ये भी जाती है। ठीक है, चलो नाउ वी कम टू सब रूल 1 में अभी और चीजें बची हैं। तो सब रूल 1 में क्या लिखा है? एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटिंग प्लेंट इन डुप्लीकेट टू द कोर्ट और सच ऑफिसर एज इट अपॉइंट्स इन दिस बिहाफ। क्या लिखा है? टू द कोर्ट और सच ऑफिसर एज इट अपॉइंट्स इन दिस बिहाफ। तो जो भी हम लोग डॉक्यूमेंट्स अभी तक बना रहे थे, जैसे कि हम लोगों ने एक प्लेंट बनाया, प्लेंट को सपोर्ट करने के लिए एफिडेविट,
और एक कॉपी ऑफ प्लेंट भी हो गई थी. व्हाट डू वी डू विद दिस? वी ईदर सबमिट इट टू द कोर्ट or we submit it to the officer appointed by the court. Officer appointed by the court. अब याद रखो, this officer, he sits at the filing counter in the court. Filing counter in the court. हर एक कोर्ट में एक फाइलिंग काउंटर होता है. So what you do with the documents? You can take it to the court. ऐसा नहीं है, theoretically this is also possible, but the court is busy in conducting the trial and examining the witnesses and summoning the witnesses. Examining and summoning. So theoretically, you can go to the court with the plaint, but the court will not entertain it. Court will say कि filing counter पे जाओ, वहां पर एक ऑफिसर बैठा होगा, उसे दे दो. Right? Nazim, you pointed out in the beginning कि सर कोर्ट लेके जाएंगे. Although you do go to the court, but not to the court. कोर्ट में ही आपका एक फाइलिंग काउंटर होता है. There you take it. वहां पर एक ऑफिसर ऑलरेडी अपॉइंटेड बाय द कोर्ट और उसका काम यही है. राइट? इसको हम लोग कभी कभी फैसिलिटेशन सेंटर भी कहते हैं. फैसिलिटेशन सेंटर भी कहते हैं. फाइलिंग काउंटर या फैसिलिटेशन सेंटर, इट कैन बी both of them. So Nazim, are you getting my point? जो तुमने बोला था कि कोर्ट में होता है, I said also okay, वो तो true है, but that is incomplete. कोर्ट में you can go theoretically, but what is the practice? You go to the filing counter. So याद रखना कि this rarely happens. This rarely happens. बहुत कम ऐसा होता है where you can directly go to the court because the court is already busy. और जब ऑफिसर अपॉइंटेड है उसके लिए, तो why is the court going to waste its time? So the practice is you go to the filing counter. ठीक है? This happens almost 100% of the time. No court is willing to कि आप अपना plaint लाओ, मैं देखूंगा. No, that does not happen. ठीक है? So practically, so theoretically you can go to the court, but practically you never go to the court. You go to the filing counter or the facilitation center. ठीक है? चलो, अब यहां पर देखो, जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा था कि व्हाट डू वी डू विद द प्लेंट एंड द एफिडेविट. क्वेश्चन नंबर 2 लिखा था हम लोगों ने, व्हाट डू वी डू विद द प्लेंट एंड द एफिडेविट. उसका आंसर यहां पर है, वी ईदर टेक इट टू द कोर्ट और वी टेक इट टू द ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट. ठीक है? Who sits at the filing counter. अभी ये फाइलिंग काउंटर याद रखना, ये थोड़ी देर में हमारे फिर से काम आएगा. दिस फाइलिंग काउंटर थिंग इज इंपॉर्टेंट. ठीक है? अभी हम लोग चल रहे हैं अपने आगे. देखो, अब हम लोग आते हैं रूल 1 के सब रूल 2 में. दिस इज, हम लोग ऑर्डर 4 का रूल 1 ही कर रहे हैं. सब रूल 2 में देखो क्या लिखा है, एवरी प्लेंट शैल कंप्लाई विद द रूल्स कंटेन्ड इन ऑर्डर 6 एंड ऑर्डर 7. तो प्लेंट हैज टू कंप्लाई with the rules and filing counter provide the file number. Right, Devika? I'm also coming to that point. You have raised a good point, but I will be coming to that point. रुक जाओ, अभी स्टेप बाय स्टेप आते हैं बेटा. So ऑर्डर 6 से कंप्लाई करना पड़ेगा एंड ऑर्डर 7 से कंप्लाई करना पड़ेगा किसी भी प्लेंट को. याद रखो, वी आर डूइंग सब रूल 2 एंड सब रूल 2 में इट सेज, राइट, प्लेंट को कंप्लाई करना पड़ेगा ऑर्डर 6 से एंड ऑर्डर 7 से. याद रखो, दिस इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1, दैट व्हाट शुड बी द कंटेंट्स ऑफ द प्लेंट. डू यू रिमेंबर? मैंने पूछा था व्हाट शुड बी द कंटेंट्स ऑफ द प्लेंट. ये तो बताया ही नहीं है. प्लेंट होगी लेकिन प्लेंट के अंदर क्या होगा ये बताया नहीं. दिस इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 कि प्लेंट में क्या होना चाहिए. सो ऑर्डर 6 इज प्लीडिंग्स जनरली. ऑर्डर 6 इज प्लीडिंग्स जनरली and order 7 is plaint. ये है दोनों एक्चुअली मिलके आपको बताते हैं कि what should be the contents of the plaint, what we should write in a plaint and what we should not write in a plaint, right? All those things will determine कि plaint के अंदर क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए. ठीक है? So for now, अभी देखो ऑर्डर 4 में हमारा अभी एक रूल बचा हुआ है, but I am leaving order 4 in the middle और मैं आ रहा हूं पॉइंट नंबर 3 पे. पॉइंट नंबर 3 इज ऑर्डर्स. देखो, अगर उसमें भी देखो अपनी चेकलिस्ट में ऑर्डर 6 वाज द पॉइंट नंबर 3. दिस इज प्लीडिंग्स जनरली. प्लीडिंग्स जनरली. अगर चेकलिस्ट तुम लोगों ने लिखी थी, जस्ट उस चेकलिस्ट में देखो ऑर्डर 6 था या नहीं प्लीडिंग्स जनरली हमारा. एवरीवन, कैन यू चेक?
दोज ऑफ यू हु हैव रिटन कि क्या हुआ था, चेकलिस्ट लिखी थी, देविका, हितेश, ज्योति, महेश, मनीष, मानसी, नीरज, अकील, एवरीवन, राइट। सो राइट, ओके, चलो। सो प्लीडिंग्स जनरली देखो, एनीवेयर इन सीपीसी, याद रखना, एनीवेयर इन सीपीसी, एज सून एज यू कम अक्रॉस द वर्ड प्लीडिंग, याद रखना, प्लीडिंग वुड मीन ईदर प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। रिटन स्टेटमेंट, प्लीडिंग का मतलब या तो प्लेंट होगा या फिर रिटन स्टेटमेंट होगा। दिस ऑर्डर 6 रूल 1 एक्चुअली एग्जैक्टली यही लाइन बोलता है। इफ एनी ऑफ यू हैव द बेयर एक्ट, कैन यू जस्ट वेरीफाई दिस इंफॉर्मेशन? जिसके पास भी बेयर एक्ट की फिजिकल कॉपी है अभी आपके सामने, कैन यू जस्ट वेरीफाई कि ऑर्डर 6 रूल 1 डज इट से कि प्लीडिंग शैल मीन प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट? देखो जरा, चेक करो, जिनके पास भी बेयर एक्ट है चेक करो एक बार। ऑर्डर 6 का रूल 1 देखो, लिखा है प्लीडिंग शैल मीन प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट, राइट? राइट, राइट, बिल्कुल, WS एंड प्लेंट। सो एनीवेयर इन सीपीसी यू कम अक्रॉस द वर्ड प्लीडिंग, इसका मतलब प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट दोनों हो सकता है। ऑल्दो वी आर स्टडिंग इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लेंट, बिकॉज हम लोग सूट फाइल कर रहे हैं, तो अभी तो प्लेंट की बात करेंगे, नॉट रिटन स्टेटमेंट। दिस इज, वी आर नॉट कंसर्न विद दिस हियर। बट अगर देखो, इस ऑर्डर का नाम क्या है? प्लीडिंग्स जनरली। प्लीडिंग का मतलब प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट बोथ, और जनरली वर्ड यूज्ड है। प्लीडिंग्स जनरली का मतलब हुआ दोज जनरल प्रिंसिपल्स, दोज जनरल प्रिंसिपल्स which are applicable upon plaint as well as written statement, upon plaint as well as written statement, दोनों के ऊपर जो होते हैं वो है हमारे ऑर्डर 6 में, रूल्स रिगार्डिंग प्लेन्स और WS, राइट? वेरी गुड नजीम। सो दोज जनरल प्रिंसिपल्स विच आर एप्लीकेबल अपॉन प्लेंट एज वेल एज रिटन स्टेटमेंट, ये दोनों पर एप्लीकेबल होते हैं। तो ऑफ कोर्स हम लोग प्लेंट के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, तो प्लेंट पर तो ऑर्डर 6 के प्रिंसिपल्स लगेंगे ही लगेंगे। अब याद रखना, ऑर्डर 6, इफ यू हैव द बेयर एक्ट, यू कैन सी इट इज अ वेरी बिग ऑर्डर। कितने दिख रहे हैं वहां पर? 18-19 रूल्स दिख रहे हैं वहां पर, देखो, इट इज अ वेरी बिग ऑर्डर, ऑर्डर 6। ऑर्डर 6 इज अ टॉपिक इन इटसेल्फ, वो अपने आप में एक टॉपिक होता है, सो दैट कैन नॉट बी कवर्ड इन आवर लेक्चर बिकॉज वो एकदम सेपरेट टॉपिक हो जाएगा। बट स्टिल आई विल गिव यू एन ओवरव्यू कि ऑर्डर 6 में क्या क्या चीजें हमारी होती हैं। देखो, प्लीडिंग्स की जब तक बात करें, वन ऑफ द बेसिक रूल्स ऑफ प्लीडिंग इज, सबसे पहले, प्लीड फैक्ट्स एंड नॉट लॉ। यू हैव टू प्लीड फैक्ट्स एंड नॉट लॉ। आप प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट में आप सिर्फ फैक्ट्स लिख के दोगे, लॉ अप्लाई उस पर करना कोर्ट का काम होता है, नॉट ऑफ द पार्टी और द एडवोकेट, नहीं, याद रखना, राइट? प्लीड फैक्ट्स एंड नॉट लॉ। दूसरी चीज, प्लीड, अगर हम लोग कह रहे हैं प्लीड फैक्ट्स, तो तुम लोगों ने एविडेंस में शायद पढ़ा हो दैट फैक्ट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज फैक्ट्स इन इश्यू एंड रेलेवेंट फैक्ट्स। पढ़ा है तुम लोगों ने? फैक्ट्स इन इश्यू एंड रेलेवेंट फैक्ट्स, राइट? याद रखना कि इन अ प्लीडिंग, दैट मीन्स प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट, you only plead facts in issue and not relevant facts. You only plead facts in issue and not relevant facts. प्लीडिंग में आपको सिर्फ फैक्ट्स इन इश्यू देने होंगे, नॉट रेलेवेंट फैक्ट्स, ठीक है? थर्ड, प्लीड फैक्ट्स एंड नॉट एविडेंस। प्लीड फैक्ट्स एंड नॉट एविडेंस, ठीक है? एविडेंस नहीं देना आपको वहां पर, आप अपने प्लीडिंग में ही एविडेंस नहीं देते हो। एविडेंस इज समथिंग विच यू गिव एट ट्रायल स्टेज, ठीक है? सो दिस इज जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू कि प्लीडिंग में क्या क्या होता है। तो यू ओनली हैव टू प्लीड फैक्ट्स एंड नॉट द लॉ। प्लीड फैक्ट्स इन इशू एंड नॉट रेलेवेंट फैक्ट, दिस इज द क्लासिफिकेशन मेड बाय द इंडियन एविडेंस एक्ट, राइट? Third is plead facts and not evidence. Evidence is something you give at trial stage, जब हियरिंग चल रही हो। अभी तो आप रिटन सबमिशंस पे ही हो,
प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट पे. यू डोंट लीड एविडेंस हियर, आप वो ट्रायल स्टेज पे देना. सो दिस इज जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू कि what happens in a pleading, right? So section 3 in evidence act 1872, right? Very good, Devika. ठीक है, चलो. Now we come to point number 4. Point number 4 is plaint, which is order 7. देखो, the word plaint, it has not been defined in CPC, not been defined in CPC. But how will you define a plaint? If it is not defined in CPC, well, somebody else must have defined it, a jurist, a person who is knowledgeable in law. How will you define plaint in the basic terms? Suppose तुम लोगों का कोई friend है who is not from a legal background, उसे कैसे explain करोगे कि what is a plaint? एकदम basic terminology तुमको use करनी पड़ेगी वहां पर. So you cannot explain relief or cause of action, वो तो technical terminology हो जाएगी. Suppose your friend is from an engineering background. Presentation of issues, okay Nazim, but you have to explain to him what are issues. Plaint is a legal document, okay, but Akil, गलत नहीं है तुम्हारी बात, लेकिन does it really tell you, because legal document can be anything. Plaint is also a legal document, true, but purpose क्या है plaint का? That is not here. Plaint is an accusation. Okay, very close, Nidhi, very close. Right, plaint is an accusation. Right. देखो, सबसे सिंपल टर्म्स में अगर प्लेंट को डिफाइन करना है तो ये लिख लेना एक डेफिनेशन. इट इज अ सेट ऑफ एलिगेशंस upon which a person seeks the assistance of the court. Seeks the assistance of the court. This is the most basic thing, right? ये अगर आप नॉन लीगल बैकग्राउंड से हो तो भी समझ जाओगे कि ओके यस इट इज अ सेट ऑफ एलिगेशंस. और प्लेंट में आप कोर्ट के पास तभी ना गए बिकॉज यू सीक द हेल्प ऑफ द कोर्ट, यू सीक द असिस्टेंस ऑफ द कोर्ट. एवरीबॉडी, सबको ये वाली डेफिनेशन समझ में आ रही है? अक्षय, आशीष, भारती, देविका, हितेश, ज्योति, मनीष, मानसी, एवरीवन. दिस इज द सिंपल वन. आप इसमें आप बहुत सिंपल तरीके से आप समझ सकते हो कि इट इज अ सेट ऑफ एलिगेशंस, राइट? मोनिका, नेहा, प्रतीक, राहुल, एवरीवन, उमा, मेघा, एवरीवन, सब लोग को ठीक है. सो दिस इज अ सेट ऑफ एलिगेशंस अपॉन विच अ पर्सन सीक्स द असिस्टेंस ऑफ द कोर्ट. अब अगर तुम लोगों के पास बेयर एक्ट है तो कम टू ऑर्डर 7 रूल 1. एज नजीम पॉइंटेड आउट इन द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर कि सर ऑर्डर 7 रूल 1 पर होगा, राइट? वहां पर देखो देयर आर मेनी थिंग्स देयर, जैसे कि आई एम जस्ट गिविंग यू अ फ्यू एग्जांपल्स. नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लेंटिफ, राइट? ये होगा वहां पर. देन देयर विल बी द नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिफेंडेंट. Name and description of defendant. There would also be the jurisdiction of the court. Jurisdiction, valuation, limitation, ये सारी चीजें वहां पर तुम लोगों को दिख रही है. Valuation of the suit. There will also be limitation. Is the suit within the limitation period or not? There will also be a statement of cause of action. Yes, statement of cause of action. And then of course there will be a relief. So you can see that plaint contains many facts. अभी तो हम लोग ऑर्डर 7 रूल 1 पर ही है, and in rule 1 itself, ऑर्डर 7 रूल 1 में ही ये सारी चीजें हमारी दी हुई हैं, ठीक है? So देखो, plaint is also a topic in itself, so we cannot go into the whole plaint thing because उसके लिए आपको सेपरेट वो करना पड़ेगा. That is a separate topic. उसमें भी 2 लेक्चर कम से कम आपके जाते हैं. बट दिस इज जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू कि प्लेंट में हमारा क्या क्या होता है. ऑर्डर 7 रूल 1 में एक्चुअली वो चीजें लिखी है कि बेसिकली क्या होना चाहिए, बट ऑर्डर 7 रूल 1 इज नॉट द ओनली थिंग. उसके अलावा आपके पास बहुत सारी चीजें हैं जो कि ऑर्डर 7 में दी हुई है. सो वी कैन नॉट गो इनटू द डिटेल्स. सो अब लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट आइटम इन द चेक लिस्ट,
which was number 5, which is order 6 rule 15. This is verification of pleadings. Verification of pleadings, right? Chalo, if you have the bare act, just open the bare act. If you don't have the bare act, just look at the screen. Screen पे देखो, order 6 rule 15 हम लोग कर रहे हैं. This is order 6 rule 15. देखो सब rule 1 पे चलते हैं. देखो क्या लिखा है, save as otherwise provided by any law for the time being in force, every pleading shall be verified at the foot. पहली चीज क्या लिखा है, every pleading shall be verified at the foot. उसके बाद क्या लिखा है, by the party or by one of the parties pleading or by some other person proved to the satisfaction of the court to be acquainted with the facts of the case. So every pleading shall be verified at the foot by the party or by one of the parties pleading or by some other person proved to the satisfaction of the court to be acquainted with the facts of the case. याद रखना, order 16 का order 6 का rule 15, sub rule 1 answers 2 questions. ये आंसर करता है 2 question. One is where to verify. Where to verify, verification कहां होती है, इसका आंसर दिया था at the foot. At the foot, ये एकदम नीचे की तरफ होता है. तो suppose this is the document and you have to verify this document. verification हमेशा कहां होगी, नीचे की तरफ, at the foot, यहां पर कहीं होगी verification. So this point was pretty straightforward. यहां पर तो वो कुछ ऐसा कुछ twisted नहीं है. But the second part is, the second question that this sub-rule answers is where to verify. Sorry, who may verify. Who may verify, कौन कौन वेरिफिकेशन कर सकता है. और उसमें हम लोगों ने देखा था कि बेयर एक्ट में क्या लिखा था, by the party or by one of the parties pleading or by some other person proved to the satisfaction of the court to be acquainted with the facts of the case. तो कौन कौन वेरिफिकेशन कर सकता है, by the party or by one of the parties pleading, by one of the parties pleading, or a person not a party, a person not a party, but court considers him to be acquainted with the facts of the case. To be acquainted with the facts of the case. Right? So देखो हम लोग कॉमन सेंस से ये गेस कर सकते थे कि दोनों पार्टीज तो कर देंगी. राइट, कॉमन सेंस से हम लोग गेस कर सकते थे कि हु मे वेरीफाई, दोनों में से एक पार्टी तो कर ही सकती है, दोनों पार्टीज भी कर सकती है. इंटरेस्टिंग थिंग कहां है, a person not a party but court considers him to be acquainted with the facts of the case. अब इसके बेसिस पर आई एम पुटिंग अप अ क्वेश्चन एंड आई वांट एवरीबॉडी टू रिस्पॉन्ड. ध्यान देना क्वेश्चन पे. देखो सिचुएशन ये है that A is suing B. A is suing B. There is this person C who is A's witness. There is this person D who is B's witness. Right? This is the situation. Now the question is, who all are eligible to verify. Eligible to verify. और ऑप्शन पे ध्यान देना, यहां पर ऑप्शन अच्छे से देखना. A and C as they are on plaintiff's side. B ऑप्शन है आपका. A and B as they are parties to the suit. Parties to the suit. C is B and D as they are on defendant's side. And option D is A or B or C or D. So what is the answer to this question? कौन कौन कर सकता है वेरिफिकेशन, कौन इनमें से कितने लोग एलिजिबल हैं? ओके, वेरी गुड.
रिस्पॉन्सेज आना स्टार्ट हो गए. प्रतीक, उमा, एंड देयर वाज वन पर्सन मोर. रुक जाओ. आशीष, राइट. मोहम्मद अकील, देविका, ऑल आर सेइंग डी. और बाकी लोग रिस्पॉन्ड करो. राहुल, ज्योति, राइट. मनीष, डी. डी, ओके, वेरी गुड. राइट, डी इज द आंसर. डी इज द आंसर. देखो, जुडिशरी के प्रीलिम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करो. जुडिशरी के क्वेश्चंस में ऐसे ही क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करो. देखो, बेयर एक्ट की लैंग्वेज वाज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. वहां पर एकदम लिखा था कि बाय सम अदर पर्सन प्रूव टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट. वो क्या करेंगे, बेयर एक्ट की लैंग्वेज को ही ले करके और उसे थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे. अगर तुम लोग बेयर एक्ट से थोरो हो बेटा, प्रीलिम्स में डरने की जरूरत नहीं है. प्रीलिम्स आपका अपने आप ऐसे ही क्लियर हो जाएगा. ठीक है, so you don't need to be scared about the bear act, about the prelims if you are thorough with the bear act. I am stressing this again and again because मुझे एक दो prelims देने के बाद समझ में आया था कि bear act की इंपॉर्टेंस बहुत है. ठीक है, चलो. Have I made my point? Is this thing clear to everyone? सबको समझ में आ रहा है ये वाला पॉइंट बेटा? अगर आप बेयर एक्ट से क्लियर हो तो वहां कितना भी वो ट्विस्ट करेंगे, आप आंसर फिगर आउट कर लोगे एक बार में ही. एवरीवन, राहुल, मनीष, मानसी, नजीम, उमा, भारती, आशीष, अक्षय, एवरीवन, सबके क्लियर है? नजीम, मनीषा, मानसी, एवरीवन, नंदिनी, निधि मित्तल, एवरीवन, ओके. चलो चलो, नाउ वी कम टू सब रूल 2. अब हम लोग सब रूल 2 पे आते हैं. देखो, सब रूल 2, बिफोर गोइंग टू इनटू द बेयर एक्ट, I will give you an example and this is a very important example और याद रखना बहुत जगह तुम्हारे काम आने वाला है ये. ठीक है, चलो. Let's say there is this person A who lives in Delhi. There is the person A who lives in Delhi. A is the owner of a house. Owner of a house. As the owner of the house, A says, I have the right to exclusive possession. A says, I have the right to exclusive possession. Pehla question, is A right in saying this? That if I am the owner of the house, I have the right to exclusive possession. Is A right in saying this? Is he? Everybody, Mansi, Neha, Nazim, Ashish, Jatin. अगर मेरा घर है तो मैं रहूंगा. जस्ट लाइक मेरी कार है तो मैं चलाऊंगा. मेरा फोन है, मैं ऑपरेट करूंगा. नो वन एल्स, राइट? देविका, राइट. ही इज राइट इन asserting his right that if I am the owner, I will live here. कोई और नहीं रहेगा, राइट? पहली चीज. चलो, let's say A goes to Jaipur. A goes to Jaipur for 3 months, right? When he comes back to Delhi, he finds that B is occupying the house. B occupy कर रहा है house A का. What A does? A goes to his advocate. A अपने advocate के पास जाता है and he tells the advocate that my name is this. मेरा नाम A है. My name is this and I am the owner of a house. I am the owner of the house, and there is this person B who is occupying my house. Who is occupying my house, and I want my house back. I want my house back, and then he will say, "Please advise." बताइए मैं क्या करूं? Order 20, Rule 12. Okay, not wrong, Nazim, but not correct either. You are somewhere in the middle. जो तुम कह रहे हो although कि वो correct है but not necessary. देखिए, advocate बोलेगा under section 6 of the Specific Relief Act, you do have a case. Nazim, do you know about this provision? Section 6 of Specific Relief Act. This will give you a speedy, this is much more speedier because इसका जो decision है within 6 months आ जाना चाहिए. If you have read this, you should know
कि अगर एसआरए के अंदर या राइट पोजीशन फॉर रिमूवेबल प्रॉपर्टी, तो आपको तो मच मोर स्पीडी रिलीफ इज अवेलेबल टू हिम ना अंडर सेक्शन 6, नॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, राइट, वेरी गुड. सो अंडर सेक्शन, सो अगर बताओ जो तुमने कहा कि अंडर ऑर्डर 20 रूल 12 यू मे फाइल अ सूट, यू मे, बट दैट सूट कैन गो ऑन फॉर ईयर्स, right? You have that option, but is it not a better option that you go under section 6 of SRA? Right, this is the better option. So your advocate will say ki, okay, you do have a case under section 6 of SRA, right? So when the lawyer and the client, they have met and now they are supposed to file a plaint, what that plaint would look like, देखो ऐसी कुछ दिखेगी. The plaint would look like something like this. सबसे पहले क्या करेगा, ये बताएगा अपना नेम एंड डिस्क्रिप्शन. तो सबसे पहले हमारा रहेगा नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लेंटिफ, सबसे पहले. सेकंड वुड बी द नेम and description of the defendant who is B. Plaintiff is A. Number 3 would be the description of property. Description of property. How do you describe a property? Simple है यहां पर तो हमारा, it can be house number हो सकता है, it can be the plot number, or it can also be flat number, कुछ भी. It can be anyone. So enough information to identify the property. हम लोगों को पता चल जाए. Number 4 would be the statement of cause of action. The statement of cause of action. Right. Now, anybody can answer what is cause of action? क्या होता है cause of action? सबसे basic meaning भी अगर आप बता दोगे, it's okay. What is cause of action? सबसे basic चीज. What is cause of action? Anyone? कोई भी? Okay, देखो, right to sue, violation of legal rights. Okay, none of you are wrong. देखो, सबसे basic meaning की बात कर रहा हूं मैं. That would be reason for filing a suit. Reason for filing a suit. This is the simplistic or the basic meaning, but this does not mean कि आपका यहां पर clear हो गया. आपको इससे थोड़ा advance पता होना चाहिए. Always remember that cause of action will have two elements. Yes, Ashish, also good. Cause of action will have two elements. Number 1 will be the existence of a legal right. Number 1 would be the existence of a legal right, and number 2 would be the violation or the infringement of that right. Infringement of that right. Always remember, cause of action में आपको ये दो elements distinctly लिखने होते हैं. अपनी plaint में ये दोनों distinctly लिखने होंगे that I had a right and that right has been violated. आपको दोनों चीजें establish करनी होती हैं. ठीक है, अपने plaint में आपको दोनों लिखना होगा. So ये जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अभी किया है, इसे हम लोग अपने एग्जाम्पल पे अप्लाई करके देखते हैं. नंबर 1, ए सेज आई हैव द राइट टू एक्सक्लूसिव पोजेशन. ए सेज आई हैव द राइट टू एक्सक्लूसिव पोजेशन. हैज ए फुलफिल्ड द फर्स्ट पॉइंट that there is a legal right here? आंसर करो, yes or no. Has A fulfilled the first point? That yes, there is a legal right which exists here, right? He has established the right. I am the owner and that is why I have the right to exclusive possession, right? Second would be B is occupying my house and thus violating my right of exclusive possession. क्या ए ने दोनों पॉइंट फुलफिल किए? As soon as दोनों फुलफिल, the question is that does A have a cause of action against B? बताओ, does A have a cause of action here? क्या A ने दोनों पॉइंट फुलफिल कर दिए? Does he have a reason to file a suit now?
एवरीवन? राइट, ए को दो पॉइंट फुलफिल करने होते हैं. That one, in one point he has to establish that he had a right, and in the other point he has to establish that my right was violated, right? और देखो, cause of action is not limited to our examples. और ये बात याद रखना कि cause of action का जो ये हम लोगों ने बेसिक किया है, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट कि 2 पॉइंट्स फुलफिल करने होते हैं, 2 एलिमेंट्स. याद रखना. अच्छा, तुम लोगों ने हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ा है? हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, उसमें तुम लोगों ने सेक्शन 9 में रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स पढ़ा था, आरसीआर जिसको हम लोग कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, आरसीआर. एवरीबडी, आई थिंक एवरीबडी मस्ट हैव, राइट? एवरीबडी मस्ट हैव, राइट? वेरी गुड. चलो, अब देखो, आई विल गिव यू एन एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखो. चलो बताओ, डज मैरिज गिव द राइट ऑफ कोहैबिटेशन टू हस्बैंड एंड वाइफ? क्या मैरिज से राइट ऑफ कोहैबिटेशन मिलता है हस्बैंड एंड वाइफ को? डज इट एवरीवन? मिलता है, राइट? सो राइट ऑफ कोहैबिटेशन आ गया है. both of them have the right of cohabitation. Suppose the husband has not lived with the wife for 2 years and he is refusing to come back. Is the husband not violating the wife's right of cohabitation? Violating W's right of cohabitation कर रहा है या नहीं कर रहा है? एवरीवन बताओ. कर रहा है, राइट? सो यू हैव, एवरीवन बताओ, कर रहा है? सो यहां पर क्वेश्चन है कि डज W have a cause of action against H? Yes or no? Does W have a cause of action against? Yes. मिल गया cause of action, right? याद रखना. चलो, आई विल गिव यू वन मोर एग्जाम्पल. थोड़ा सा हम लोग टॉपिक से डिविएट कर रहे हैं, बट फिर भी आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट तो पढ़ा होगा तुम लोगों ने, राइट? एवरीवन पढ़ चुके होंगे. कॉन्ट्रैक्ट तो इनफैक्ट तुम लोग के एकदम स्टार्टिंग के लेक्चर्स में हो गया होगा. सपोज ए लोन्स बी ₹50,000. ए ने बी को लोन दिए 50,000. As soon as A loans ₹50,000 to B, does A have a right to recover that money? Does A have a right to recover that money? Right, तुम लोग right establish कर दिया. Later on, B refuses to pay. B says, I am not paying your money. Is B not violating A's right? Violating A's right to recover that money? To recover that money. कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर लिया? चलो, इस क्वेश्चन का आंसर दो. Does A have a cause of action against B? Does A have a cause of action? मिल गया एक cause of action, राइट? देखो, कॉज ऑफ एक्शन इज अ वेरी सिंपल थिंग. बहुत सिंपल है. 2 एलिमेंट याद रखो. और सीपीसी में ही नहीं, एनीवेयर इन सीपीसी ऑफ कोर्स, बट एनीवेयर इन एनी काइंड ऑफ सिविल लॉ. अगर आपको सिविल लॉ में है तो कहीं भी आपको कॉज ऑफ एक्शन ढूंढना है कि कॉज ऑफ एक्शन मिला या नहीं मिला, देयर व्हाट यू हैव टू डू, ओनली लुक एट 2 एलिमेंट्स. ठीक है? दैट इज व्हाई इन द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर आई सेड कि इफ यू आर थॉरो विद सीपीसी, आपका हिंदू मैरिज एक्ट भी क्लियर हो जाएगा और आपका कॉन्ट्रैक्ट भी क्लियर होता जाएगा. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट यू आर गोइंग टू स्टडी. ठीक है? दिस इज जस्ट वन एग्जांपल कि कैसे होता है ये सारा कुछ. और हम लोगों ने जो एग्जांपल लिया था, दैट वाज ऑफ टीपीए. टीपीए का था ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी, दैट वाज अ हाउस, सो दैट वाज टीपीए. तो टीपीए से लेकर के हिंदू मैरिज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, हर जगह आपका ये एग्जांपल जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है कॉज ऑफ एक्शन वाला, आपका एप्लीकेबल हो सकता है. ठीक है? चलो, we were doing point number 4. We are coming back to our topic. We were doing point number 4, जिसमें हम लोगों ने statement of cause of action दे दी थी. Now in in the plaint you also have to give a declaration that the suit is not barred
द सूट इज नॉट बार्ड बाय लिमिटेशन, राइट। ये डिक्लेरेशन भी आपको उसमें देनी पड़ती है कि दिस इज विद इन द लिमिटेशन पीरियड, आई एम फाइलिंग इट विद इन द लिमिटेशन पीरियड। ऑल्सो यू विल हैव टू गिव अ डिक्लेरेशन दैट द सूट इज not barred by res judicata. This declaration has also to be there in the plaint. और एक और जैसे the suit is properly valued, क्योंकि वैल्यूएशन भी आपको देनी होती है। The suit is properly valued under the suit valuation act, under the suit valuation act of 1887, राइट। और भी चीजें होंगी, ज्यूरिसडिक्शन होगा, रिलीफ होगा, बट हम लोग हर चीज तो नहीं कर सकते, वी डोंट हैव दैट मच टाइम। सो चलो, नाउ आई एम कमिंग बैक टू पॉइंट नंबर 1 एंड आई एम गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन एंड आई वांट एवरीबॉडी टू रिस्पॉन्ड। सबको रिस्पॉन्ड करना है। चलो पॉइंट नंबर 1 पे वापस आते हैं एंड टेल मी, इज द पॉइंट नंबर 1 अ पॉइंट ऑफ फैक्ट और अ पॉइंट ऑफ लॉ? पॉइंट नंबर 1 क्या है? पॉइंट ऑफ फैक्ट है या पॉइंट ऑफ लॉ है? इज दिस अ फैक्ट? माई नेम इज दिस एंड आई लिव हियर एंड आई वर्क हियर, दैट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ए। नो, इट इज अ पॉइंट ऑफ फैक्ट। माई नेम इज दिस, आई लिव हियर, दिस इज अ फैक्ट। ये एक फैक्ट है, राइट, पॉइंट ऑफ फैक्ट है। पॉइंट नंबर 2 ऑल्सो क्या है? This is also a point of fact. Point number 2 is also a point of fact, right? Similarly, point number 3 क्या है हमारा? Also a point of fact, right? And similarly, point number 4 भी हमारा क्या है? Point of fact है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर कहीं भी law mention नहीं किया है. So this cannot be point of law. These are all points of fact. So हम लोग क्या करते हैं, एक छोटी सी लिस्ट बना लेते हैं ऑल ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ फैक्ट। तो जितने भी हमारे पॉइंट्स ऑफ फैक्ट थे, पॉइंट्स ऑफ फैक्ट हमारे कौन कौन से थे? 1 2 3 4। नाउ कमिंग टू पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या है? पॉइंट ऑफ फैक्ट है या पॉइंट ऑफ लॉ है? दिस सूट इज नॉट बार्ड बाय लिमिटेशन, दिस इज लॉ, राइट राहुल एंड नजीम, अकील एकदम, देविका शाहबाज एकदम करेक्ट। दिस इज पॉइंट ऑफ लॉ। पॉइंट नंबर 6 क्या है? इट इज नॉट बार्ड बाय रेस जुडिकेटा, दिस इज ऑल्सो लॉ, पॉइंट ऑफ लॉ है यहां पर, लॉ सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी, राइट नजीम। पॉइंट नंबर 7 ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ लॉ। दोनों चीजें यहां पर हम लोग को दिख गए, राइट, वेरी गुड देविका। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ लॉ। That means 5, 6 and 7, these are the points of law. Jurisdiction बेटा वैसे नजीम हम लोगों ने अपने एग्जांपल में तो लिया नहीं, because that would have been too elaborate, इसलिए मैंने नहीं गया वहां पे। But jurisdiction will also be in a point of law. That the suit is within the jurisdiction of the court. That will be a point of law. ठीक है, चलो now अब हम लोग आते हैं बेयर एक्ट पे, because what we were doing order 6, rule 15, sub rule 2. नाउ कम टू द बेयर एक्ट। अब बेयर एक्ट पे आओ और देखो वहां पर ध्यान से पढ़ना क्या लिखा है। द पर्सन वेरीफाइंग शैल स्पेसिफाई बाय रेफरेंस टू द नंबर्ड पैराग्राफ्स ऑफ द प्लीडिंग व्हाट ही वेरीफाइज ऑफ हिज ओन नॉलेज एंड व्हाट ही वेरीफाइज अपॉन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एंड बिलीव्ड टू बी ट्रू। याद रखना, जो भी वेरीफाई कर रहा है उसे स्पेसिफाई करना होता है by reference to the numbered paragraphs of the pleading what he verifies of his own knowledge. own knowledge वाले कौन थे? यहां पर जो पॉइंट नंबर 1 2 3 4 थे, own knowledge, जितने भी पॉइंट्स ऑफ फैक्ट थे, ध्यान देना 1 2 3 4 वो ए लेके आया था एडवोकेट के पास। यस, राइट और रॉन्ग, 1 2 3 4 पॉइंट्स ऑफ फैक्ट वो सारे ए लेके आया था अपने एडवोकेट के सामने, लाया था, राइट, वो सारे लेकर के आया था। सो दीज इंफॉर्मेशन इज अपॉन एज ओन नॉलेज, ए खुद लेकर के आया था।
and on the basis of this information the advocate had also given him some legal advice. वो देखो वो क्या है, वो किस में आएगी, what he verifies upon information received and believed to be true. तो जितने भी पॉइंट ऑफ लॉ वाले हैं, पॉइंट्स ऑफ लॉ, दैट मीन्स 5, 6, 7, वो किस में आएंगे, इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एंड बिलीव्ड टू बी ट्रू, received and believed to be true, right? So देखो इसमें अगर ए वेरीफाई करेगा तो वेरिफिकेशन वो ऐसे करेगा, तो कैसे लिखता है, आई वेरीफाई पैराज 1, 2, 3, 4 upon my own knowledge, and he will change the paragraph and he will write, I verify paras 5, 6, 7 upon the information received from my counsel, upon the information received from my counsel and believed to be true. ठीक है, दिस इज हाउ वेरिफिकेशन इज डन इन द डॉक्यूमेंट्स. प्लीडिंग्स के वेरिफिकेशन ऐसे होता है. सो डिड यू गाइस गेट द पॉइंट कि मैंने इतना इलैबोरेट एग्जांपल क्यों लिया था, इतना बड़ा एग्जांपल? पॉइंट समझ में आया बेटा? बिकॉज जब भी आप प्लेंट फाइल करते हो तो देयर आर सर्टेन पॉइंट्स ऑफ फैक्ट एंड देयर आर सर्टेन पॉइंट्स ऑफ लॉ, और आपको दोनों की वेरिफिकेशन सेपरेटली करनी होती है, right? A verifies of his own knowledge and A verifies upon the information received from his counsel and believed to be true. तो because plaint में दो तरह की इंफॉर्मेशन होती है, पॉइंट्स ऑफ फैक्ट होते हैं, पॉइंट्स ऑफ लॉ, और उसकी जो वेरिफिकेशन भी होती है वो भी सेपरेटली होती है. ठीक है एवरीवन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जितने भी लोग हैं यहाँ पर, केशव, मेघा, मानसी, उमा, नजीम, मनीष, जतिन, दीपक, आशीष, एवरीवन, सबको ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? राहुल, मानसी, ओके, ठीक है. नाउ वी कम टू सब रूल 3. अब हम लोग सब रूल 3 पे आते हैं. चलो वी कम टू सब रूल 3. देखो सब रूल 3 व्हाट डज इट से? सब रूल 3 पे हम लोग, इट सेज द वेरिफिकेशन शैल बी साइंड बाय द पर्सन मेकिंग इट, इट शैल बी साइंड एंड शैल स्टेट द डेट ऑन विच एंड द प्लेस एट विच इट वाज साइंड. तो जो वेरिफिकेशन है उस पर क्या क्या होना चाहिए हमारा? इट शुड बी साइंड, और उस पर डेट होनी चाहिए जहां पर जिस दिन साइन हुआ था, और जिस दिन और जहां पर हुआ था, प्लेस, राइट? सो सपोज मान लो कि ये डॉक्यूमेंट है एंड यू हैव टू वेरीफाई दिस डॉक्यूमेंट. हम लोगों ने सब रूल 1 में पढ़ा था कि वेरिफिकेशन कहां होती है? एट द फुट होती है. तो यहां पर एक्चुअली ए लिखेगा, आई वेरीफाई पैराज 1, 2, 3, 4 अपॉन माई ओन नॉलेज पूरा, और फिर नीचे लिखेगा इसके, आई वेरीफाई पैराज 5, 6, 7 जो भी हो, और उसके बाद ये राइट साइड में अपना सिग्नेचर करता है वो, और लेफ्ट साइड में यहां पर डेट होती है, और इसी के नीचे ठीक प्लेस होती है. मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया है, थोड़ा बड़ा कर लो इसे, राइट? तो डेट और प्लेस ये भी होंगे, तो साइन भी होंगे, कहां साइन हुआ था और कब साइन हुआ था वो चीज भी आपको मेंशन करनी होती है. तो सब रूल 3 इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि वेरिफिकेशन जो भी करता है उसके सिग्नेचर होने चाहिए डेट और प्लेस के साथ साथ वहां पर. ठीक है, चलो नाउ वी कम टू सब रूल 4. सब रूल 4 पे आ रहे हैं हम लोग, एंड पे अटेंशन. सब रूल 4 में देखो क्या लिखा है, पे अटेंशन टू द बेयर एक्ट. द पर्सन वेरीफाइंग द प्लीडिंग shall also furnish an affidavit in support of his pleadings. The person verifying the pleading shall also furnish an affidavit in support of his pleadings. याद रखना कि जब भी आप वेरिफिकेशन करते हो, वेरिफिकेशन के साथ साथ आपको उसको सपोर्ट करने के लिए एक एफिडेविट भी साथ में जाता है, टू सपोर्ट द वेरिफिकेशन. एवरीबडी यहां तक क्लियर? अब देखो, I am going to summarize whatever we have done so far. अभी तक हम लोगों ने जो भी किया है, I am going to summarize it. So summary में देखो, number 1 we went to section 26. हम लोग section 26 में गए, and
we saw that there must be a plaint and there must be an affidavit to support the plaint. ठीक है, वेरी गुड, बनवा लिया. सेकेंड हम लोग गए ऑर्डर 4 में, रूल 1 रूल 1 सब रूल 1. यहां पर हम लोग को जाकर के रिक्वायरमेंट आई किसकी, कॉपी ऑफ प्लेंट की. इसको वहां लिखा था प्लेंट इन डुप्लीकेट, राइट. देन वी वेंट टू नंबर 3 विच इज ऑर्डर 6 रूल 15 विच इज, एक तो वेरिफिकेशन होनी चाहिए और वेरिफिकेशन को सपोर्ट करने के लिए एक एफिडेविट आपका होना चाहिए. ठीक है. सो एवरीवन remember, these are all the documents that you would need in order to institute a suit, to file a suit. Nazeem, in the beginning of the lecture you said कि 26 and order 4. Although your जो तुमने बोला था वो गलत नहीं था, बट वहां पर मैंने बोला था कि दिस इज इनकम्प्लीट, ये पूरा नहीं है. सही बोल रहे थे तुम, बट वो पूरा नहीं था बिकॉज यू वर मिसिंग द वेरिफिकेशन एंड द एफिडेविट. नजीम, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो तुमने कहा था वो रेलेवेंट था, हाँ, थोड़ा सा वहां पर बस मिसिंग था. सो याद रखो, दीज आर ऑल द डॉक्यूमेंट्स दैट यू नीड इन ऑर्डर टू फाइल अ सूट. और हम लोगों ने ऑर्डर 4 में ये भी देखा था कि व्हाट डू वी डू विद द प्लेंट एंड द एफिडेविट. सारा डॉक्यूमेंट लेके हम लोग कहां जाते हैं? वी ईदर गो टू द कोर्ट विच रेयरली हैपेंस, तो इसको निकाल ही दो, और वी गो टू द फाइलिंग काउंटर जहां पर कि वो ऑफिसर बैठता है. ठीक है. So suppose imagine करो कि we have all the documents and we have all the documents officer authorized by court, right? Filing counter पे ही है, that officer appointed by the court. Order 4 rule 1 sub rule 1 में हम लोगों ने पढ़ा था, right? Now suppose we have all the documents and we are standing at the filing counter. मान लो कि हम लोग filing counter पर ही खड़े हैं, right? चलो अब यहीं पर now you have to come to order 4 rule 2. याद रखो, ऑर्डर 4 रूल 2. हम लोगों ने ऑर्डर 4 मैंने आधा छोड़ दिया था बीच में, मैंने कहा था मैं बाद में आऊंगा. सो नाउ यू हैव टू कम टू ऑर्डर 4 रूल 2. फाइलिंग काउंटर मींस अहलमाड. I am not familiar with that nomenclature. Ashish, I am not familiar with that nomenclature. Filing counter means अहलमाड. मुझे नहीं पता बेटा, ऑनेस्टली आई डोंट नो. मतलब ये nomenclature मैंने नहीं सुनी अब तक. No sir, not Elman. I don't know. मतलब I don't think so because I have never heard it. अगर कुछ नया है तो प्लीज लेट मी नो. I don't think so, but ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ पता है. चलो, we now come to order 4 rule 2. If you have the Bare Act, order 4 rule 2 open करो, which is register of suits. Register of suits. याद रखना कि this person, the officer who is appointed by the court, he has a register of civil suits. इसके पास एक register of civil suits होता है, right? So as soon as you hand over all the documents to that officer, what does it do? चलो बेयर एक्ट में देखो क्या लिखा है. The court shall cause the particulars of every suit to be entered in a book to be kept for the purpose and called the register of civil suits. Entered into a book to be kept for the purpose and called the register of civil suits. तो आपका जो भी आप डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर करोगे वो रजिस्टर ऑफ सिविल सूट्स लेगा और उसमें वो पर्टिकुलर्स, उसमें लिखा है वर्ड पर्टिकुलर्स, particulars word लिखा है. So the particulars of that suit will be entered in a book. If you have this Bare Act, अगर तुम्हारे पास यूनिवर्सल की बेयर एक्ट है ये वाली, so whatever page number I am telling you, just come to that page number. पेज नंबर 329 पे आना है तुम लोगों को. पेज 329, दैट इज अपेंडिक्स एच. अपेंडिक्स एच देखो एक बार, जितने भी लोग के पास वो है बेयर एक्ट है, कैन यू सी इट? पेज 329 पे अपेंडिक्स एच में ऊपर लिखा होगा देखो, ऑर्डर 4 रूल 2. कैन यू सी इट एवरीबॉडी? सबको मिला? ये चेक करो, देखो जरा वहां पर वो क्या है.
वो रजिस्टर ऑफ सिविल सूट्स ही है। कौन कौन से वो रजिस्टर ऑफ सिविल सूट्स एग्जैक्टली ऐसा होता है। नीरज एंड राहुल हैव गॉट इट। एवरीवन एल्स जिनके पास भी बेयर एक्ट की फिजिकल कॉपी हो, वैक्सीन कोड, ओके, मे बी, हाँ, जिनके पास भी फिजिकल कॉपी हो कोर्ट की, अरे बेयर एक्ट की, अपेंडिक्स एच में ऑर्डर 4 रूल 2 देखो। नजीम, हैव यू सीन इट? इज ही हियर? आई थिंक ही इज लेफ्ट। ही इज हियर, नजीम इज हियर। निधि, प्रतीक, एवरीवन, सुनीता, उमा, एवरीवन, आपको पेज नंबर 329 में अपेंडिक्स एच में ऑर्डर 4 रूल 2 में, वहां देखो ऊपर लिखा है ऑर्डर 4 रूल 2, वो रजिस्टर ऑफ सिविल सूट्स एकदम एग्जैक्टली ऐसा होता है। यू कैन गो टू द कोड एंड वेरीफाई इट। वो सारा कुछ सीपीसी में ऑलरेडी दिया हुआ है। नोबडी लुक्स एट इट, कोई देखता नहीं है, बट इट इज हियर इफ यू वांट टू सी इट। ठीक है। सो व्हाट यू सो कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, चलो वो पॉइंट पे वापस आते हैं। दैट एज सून एज यू हैंड ओवर ऑल द डॉक्यूमेंट्स, उसके पर्टिकुलर्स की वो एक एंट्री कर देता है रजिस्टर ऑफ सिविल सूट्स में। हम लोगों ने देखा कि वो रजिस्टर ऑफ सिविल सूट्स कैसा होता है, सारे वहां डिटेल्स वगैरह दिए हुए हैं। अब देखो, लेट्स जस्ट टेक कि दिस ईयर इज 2020, लेट्स से 2020 है, एंड लेट्स से कि हम लोग ने जो सूट फाइल किया है उससे पहले 427 सूट्स ऑलरेडी फाइल्ड थे, और जो हम लोग सूट फाइल करने गए हैं दैट सूट इज 428, राइट? इतने ऑलरेडी फाइल थे, और ये वाला हमारा एग्जाम्पल में जो हम लोग सूट फाइल करने जा रहे हैं ये वो वाला है। सो एज सून एज वो रजिस्टर ऑफ सिविल सूट्स में एंट्री करेगा, तो ऑफिसर जो होता है फाइलिंग काउंटर पे, ही विल गिव इट अ नंबर, एंट्री करके he will give it a number, and that number would be 428, the number of suit, followed by the year number 428 upon 2020. This entry number, this actually becomes your suit number. या ध्यान देना इस चीज पे, सूट नंबर बन जाता है। नंबर आपका जिस ऑर्डर में आपका आया है आपका वही हो जाएगा, एंड फॉलोड बाय द ईयर नंबर। ये चीज आपकी उसमें लिखी हुई है रजिस्टर ऑफ सिविल सूट्स में। देखो क्या लिखा है, सच एंट्रीज शैल बी नंबर्ड इन एवरी ईयर अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर इन विच द प्लेन्स आर एडमिटेड। याद रखना एवरीवन कि एंट्री जो होती है उसका नंबर ऐसे देकर के फॉलोड बाय द ईयर नंबर, एंड दैट बिकम्स योर एक्चुअली सूट नंबर। एज सून एज he assigns you the suit number, now we can say that the suit has been duly instituted. सूट हमारा ड्यूली इंस्टीट्यूट हुआ या नहीं एवरीवन? देविका, उमा, नजीम, मेघा, राहुल, नीरज, मानसी, अखिल, जतिन, एवरीवन, सूट हमारा प्रॉपरली इंस्टीट्यूट हो गया? हो गया हो गया जी, हो गया, वेरी गुड। चलो, सो दिस इज द प्रॉपर वे टू स्टडी सीपीसी। आई वाज जस्ट डेमोन्स्ट्रेटिंग एन एग्जांपल कि कैसे पढ़ना है सीपीसी, राइट? आई कैन ऑल्सो गिव यू अदर एग्जांपल्स। लेट्स से इंटरप्लीडर सूट की बात कर लेते हैं। इंटरप्लीडर सूट, फॉर इंटरप्लीडर सूट you have to study actually 3 things. One is section 88, the other is order 35, and the third one is form 40 in appendix A. In appendix A, ठीक है? section 88, although Nazim not wrong, but section 88 सिर्फ नहीं है, section 88 के साथ order 35 है and form 40 in appendix A. आई एम जस्ट टेलिंग यू द पेज नंबर, देर पेज नंबर चेक करो जरा, जो मैंने बताया है सही है या नहीं। सेक्शन 88 इज ऑन पेज नंबर 43। अगर तुम लोग के पास बेयर एक्ट है, देखो चेक करो पेज 43 पे सेक्शन 88 इज देयर। क्या लिखा है? इंटरप्लीडर है, वेयर इंटरप्लीडर सूट मे बी इंस्टीट्यूटेड। मिल गया सबको? ओके, एंड देन वी हैव ऑर्डर 35। ऑर्डर 35 है, come to page number 203. This is page 203. देखो देविका, नीरज, you are a bit quick with the Bear Act. देखो है या नहीं है वहां पर? नजीम, if you have the Bear Act you can check.
देखो, अखिल, जतिन, मानसी, नीरज, निधि है वहां पर। राइट, राइट। अब अब जो पेज नंबर बता रहा हूं उस पे आना। कम टू पेज नंबर 249। पेज 249। देविका, आई एम सेइंग कि इंटरप्लीडर सूट के लिए you will have to study all these three provisions. That is, section 88 is on page 43, order 35 is on page 203, and form 14 appendix A is upon page 249. नजीम एंड नीरज, थोड़ा सा तुम लोग क्विक हो बेयर एक्ट में। कैन यू सी दैट अपेंडिक्स ए पे 249 पेज? देखो नंबर 14 दिया है नीचे। राइट, दैट इज एन इंटरप्रीटर सूट, दैट इज हाउ यू फाइल एन इंटरप्रीटर सूट। सो सीपीसी को कभी भी ना बेटा, डोंट गो सेक्शन वाइज। सेक्शन वाइज मत जाना, ऑर्डर वाइज भी मत जाना, डोंट गो। आपको क्या करना है, सेक्शन पढ़ना है, डायरेक्टली जंप करो ऑर्डर पे, और ऑर्डर के बाद प्रोबेबली देयर विल बी आल्सो अ फॉर्म, तो फॉर्म भी देख लो। जैसे हम लोगों ने अभी अभी जो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स किया था, हम लोगों ने सेक्शन 26 देखा, चलो ठीक है, ऑर्डर्स भी देखे कुछ, बट वो सेक्शंस एंड ऑर्डर्स ऑल्दो कि दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, बट फिर भी हम लोग अपेंडिक्स में जा करके हम लोगों ने देखा था, अपेंडिक्स एच में हम लोगों ने देखा था। सो याद रखना कि देयर इज अ वेरी गुड हार्मनी, ये सभी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। देयर इज अ वेरी गुड हार्मनी इन ऑल ऑफ दीज प्रोविजंस। सो अगर आपको इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स पढ़ना है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स, सो यू हैव टू सी इट ऑल। आप इनकम्प्लीट क्यों कर रहे हो? सेक्शन 26 ऑर्डर 4 ऑल्दो गुड, मतलब ऐसा कुछ गलत नहीं है, दैट इज करेक्ट, वो दैट पार्ट इज रेलेवेंट, बट इट इज इनकम्प्लीट। आपको और चीजें भी देखनी होगी, स्पेशली अपेंडिक्स एच में तो जाके जरूर देखना होगा वहां पर। चलो, आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जांपल कि कैसे पढ़ना है सीपीसी। तुम लोगों ने टेम्पररी इंजंक्शंस के बारे में सुना होगा। टेम्पररी इंजंक्शंस, हैव यू हर्ड इट? I think almost everybody must have heard it. Temporary injunctions. Right. Right. Order 39. Nazim, although Order 39 is correct, but for temporary injunctions, you have to study section 94C first. पहले ये पढ़ोगे. And then you will go to Order 39. Nazim, can you check this information? पहले section 94C पढ़ोगे and then you will go to Order 39. सेक्शन 94 में भी क्लॉज सी फॉर टेम्पररी इंजंक्शन, राइट? और नीरज एंड वन देविका, तुम लोग के पास बेयर एक्ट है, देखो चेक करो सेक्शन 94C एंड ऑर्डर 39, यही है या नहीं टेम्पररी इंजंक्शन? चेक करो, इज इट? यस सर, यही है। ओके, सो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सेक्शंस पढ़ने हैं और डायरेक्टली ऑर्डर पे आना है। यू कैन नॉट इग्नोर वन और दी अदर, आपको दोनों ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? सो आई थिंक आई हैव मेड माय पॉइंट कि कैसे पढ़ना है सीपीसी। सीपीसी कैन बी वेरी इजी एंड इट कैन बी इंटरेस्टिंग, बट ओनली इफ यू नो हाउ टू स्टडी इट। अगर आप लोगों ने मतलब आप वो करने लगे सेक्शन वाइज एंड ऑर्डर वाइज, याद रख लो कितनी बार भी आप पढ़ लो, यू विल ऑलवेज बी लाइक दिस कि यार ये सीपीसी में हो क्या रहा है, मेरे समझ नहीं आ रहा। ओके, सो विथ दैट आई वुड बी एंडिंग माय लेक्चर, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, पहले ये बताओ, डिड यू लाइक इट? आज पढ़ा सीपीसी, समझ आया? एवरीवन, डिड यू लाइक इट? पढ़ा, समझ आया? ओके, राइट, ओके। नजीम, ऑलरेडी मतलब मुझे लग रहा कि तुमने काफी कुछ कवर कर लिया है, बट स्टिल देयर इज अ लॉट टू लर्न। नजीम, आई वॉज कहीं कहीं आई वॉज सरप्राइज कि तुम्हें ये प्रोविजन पता था। हाँ, राइट, राइट। हाँ, तुमने स्टार्ट किया अभी, देयर इज अ लॉट टू लर्न, बिकॉज देखो यू हैव अ बेस, सो यू कैन बिल्ड अप ऑन दैट बेस, ठीक है? चलो, आई होप माई लेक्चर वॉज हेल्पफुल फॉर यू सीपीसी। एंड देखो, ये सीपीसी अगर आपने कर लिया ना बेटा, जैसे हम लोगों ने हिंदू मैरिज एक्ट, टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ टच किया था, सीपीसी अगर आपने स्ट्रांग कर लिया, आपका लॉ पूरा स्ट्रांग हो जाएगा एक जगह, एक बार में आपका पूरा स्ट्रांग हो जाएगा लॉ। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फ्रॉम एन
एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो फ्रॉम एन अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में भी मैंने तुम लोगों को क्वेश्चंस दिखाए थे, राइट, कि क्वेश्चन देखो ऐसे आ सकते हैं, बेयर एक्ट पे थरो रहो, वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, चलो, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, नाउ इज द टाइम टू आस्क। अगर है तो बताओ। इफ डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? अगर नहीं है, so that then I would be ending my lecture. And anyone wondering, my name is Anurag Singh. Anyone wondering, because I think I forgot to say my name in the beginning. My name is Anurag Singh. Okay, so if you don't have any questions, then I would be signing off now. Chalo, okay, chalo फिर everyone. Okay, chalo, that's me. Okay, goodbye, have a nice day everyone.